Dear students, good morning. Today we do some numerical questions. Okay. The first question is for the figure. Figure is given and four options are also given. I sent them in notes. Okay. Then what are the right relations between A, B and C? Then which law we use here? We see there are three vectors and we have to write the addition of three vectors, and here we use which law we use? We use triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. In triangle law of vector addition, we add two sides of a triangle which having same order. First to see which two sides are in same order. Then we see that this C and A are in same order and B is in opposite order. So C vector plus A vector equal to B vector. This is right answer. किस प्रिंसिपल से निकाला आंसर आपने? We use triangle law of vector addition. Here we use triangle law of vector addition. Now we take question number 2, 3 and 4. But before that we take a concept. देखिए, we know if two vectors are P and Q, angle between them are theta and resultant is R. Then what is the value of R? Then value of R is under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Okay. If theta equal to 0, then cos 0 is 1. Cos 0 is 1. Then it becomes under root P square plus Q square plus 2PQ. It becomes A square plus B square plus 2AB, means A plus B whole square under root. When we take whole square under root, then whole square से under हट जाएगा, then it becomes P plus Q. So if the angle between two vector quantities are 0, then the resultant of that vector quantities are maximum, and that is equal to the sum of that vector quantities. If here in this condition, if theta equal to 180 degree, so here we put cos 180 and we know that value of cos 180 is -1. In this condition, resultant will be minimum P square plus Q square minus 2PQ. Then it is P minus Q. So here we learn a concept. If two vector quantities have magnitude P and Q, then what is the maximum resultant? P plus Q. What is the minimum resultant? P minus Q. दो वेक्टर क्वांटिटीज का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है जो उनका सम होगा उसके इक्वल, और मिनिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है जो उनका डिफरेंस होगा उसके इक्वल. ओके, नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 2. टू फोर्सेस 3 डाइन एंड 4 डाइन, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो सकता है? विच इज द वैल्यू पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? ऐसा क्वेश्चन है 3 and 4 डाइन acts upon a body, the resultant force on the body can only be, कौन सा हो सकता है? देखिए, resultant force maximum कितना हो सकता है? 7. 3 plus 4 7. minimum कितना हो सकता है? 1. the values are possible which are between 7 and 1, greater than or equal to 1 and less than or equal to 7. There is more than 3 times, yes possible. More than 4 times, between 3 and 4 times, between 1 and 7. So answer is between 1 and 7. The resultant force on the body can only be, that is between 1 and 7. Okay, this is first. More than 3 times, more than 3 में 10 भी आ सकता है, that is not possible. तो maximum value और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? इनके बिटवीन होगा मैक्सिमम कितना
कितना आ सकता है 7 और मिनिमम कितना आ सकता है 1. व्हाट इज P हियर? P इज 3. व्हाट इज Q हियर? Q इज 4. देन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज P plus Q means 7 and minimum possible value is P minus Q, that is 1. हम पॉजिटिव लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या लेंगे पॉजिटिव. ओके, देन दैट इज 1. लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज a force of 6 kilogram and another of 8 kilogram can be applied to produce the effect of a single force. तो अब वन फोर्स क्या है? वन फोर्स तो 8 किलोग्राम है एंड सेकंड इज 6 kilograms and 8 kilograms. तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है 14 और मिनिमम कितना हो सकता है 2 न्यूटन. अब व्हाट इज क्वेश्चन? A force of 6 kilogram and 8 kilogram can be applied together to produce the effect of a single force. 1 kilogram not possible, less than 1. 11 kilogram between these possible. 15 kilogram not possible because it is greater than 14. And 20 kilogram it is also not possible, it is greater than 14. इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू ये होगा और मिनिमम वैल्यू ये होगा. बिलो 2, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 2 से कम और 14 से मोर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है. कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 देयर आर 3 सेट्स. क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. व्हिच सेट इज पॉसिबल मींस टू द टू फिजिकल क्वांटिटीज है, उसका क्या है रिजल्टेंट है. हाउ वी डू दिस क्वेश्चन? आप फर्स्ट टू ले लीजिए, जैसे मैंने लिया 2 and 4 लिया मान लीजिए. ओके, देन व्हाट इज द मैक्सिमम रिजल्टेंट 6. व्हाट इज द मिनिमम रिजल्टेंट 2. तो यहां पर थर्ड आ रहा है 8. क्या ये पॉसिबल है? नो, बिकॉज़ इन दोनों का मैक्सिमम कितना आ सकता है 6. ये 6 से ज्यादा है. दिस इज नॉट पॉसिबल. देन दिस मैक्सिमम इज 12 and minimum is 4. This is also not possible. Here 1 2 maximum is 3 and minimum is 1. तो ये वाला यहाँ पर पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पर 1 आ रहा है. तो इन रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इज मे बी 1 हो सकता है बिकॉज रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों के टोटल और दोनों के डिफरेंस के इक्वल या उनके बीच में हो सकता है. यहाँ पर देखिए 0.5 and maximum is 1.5 and minimum is 0.5 but it is 2, so it is not possible. So this is very important concept that if there are two forces or two vector quantities have magnitude P and Q, then maximum resultant can be P plus Q and minimum resultant can be P minus Q, or we can also write Q minus P. जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे. इसी कंसेप्ट बेटा सारे क्वेश्चन से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली. व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 1 यूनिट. अब देखिए आप, magnitude of resultant is given 1 unit, then what is the angle between them? Then we use this formula, this R. What is the resultant? Resultant is 1. वैसे आप देखिए इधर 3 unit, 3 and 4, two forces are given. We see the maximum value of the resultant of these two are 7 and minimum is 1. When 7 comes, when the angle between these two forces are 0 degree and when angle between these two forces are 180 means angle is 180 degree means both are in opposite direction, then the resultant is 1. So for first 1 unit answer is theta equal to 180 degree, and for 7 unit, for third 7 unit answer is 0 degree.
टू फोर्सेस का, टू वेक्टर क्वांटिटीज का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है? दोनों का सम के इक्वल आता है। कब आता है? जब उनके बीच का एंगल कितना हो? 0 डिग्री। ओके, एंड रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा? व्हेन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दिस कंडीशन 4 Newton and 3 Newton are in opposite direction, and in this condition 7 Newton, 3 Newton and 4 Newton both are in same direction. Now when the angle, what is the angle? When the magnitude is fine, then we use this formula. Resultant is 5. So dear students, question number 5. Question number 5 is two vectors have magnitude 3 and 4 Newton. Then what is the angle between these two vectors when resultant is 1 and resultant is 5 and 7? देखिए, we know that maximum resultant of these two vectors are maximum is p plus q. So that is maximum is 7. When the resultant is 7, then angle between 3 and 4 vectors are 0 degree. And when the resultant is 1 unit, then the angle between 3 unit and 4 unit vectors are 180 degree. Okay, in this condition for first answer is 180 degree and for third answer is 0 degree. Angle between these two vectors. For 5 unit, if resultant is 5 unit, then what is the angle between P and Q? So we have to find by this formula. P, R is 5, resultant is 5. P first is 3, Q is 4, 2P 2 cos theta. Squaring both sides, square of 5 is 25, and 9 plus 16 is also 25. 25 minus 25 0. So cos theta becomes 0. When the cos theta is 0, cos theta की वैल्यू 0 कब होती है? When theta is pi by 2, then cos theta is 0. So in this condition, angle between 3 and 4 unit vectors are 90 degree. At that condition, resultant is 5 unit. Okay. Now question number 6. Question number 6 is a blind person walk after walking 10 steps in one direction, each of length 80 cm, turns randomly to the left or to the right. By 90 degree after walking a total of 40 steps, the maximum possible displacement. देखिए, यहाँ से वो चलता है 10 स्टेप्स लेता है। वन स्टेप में 80 सेंटीमीटर मींस 0.8 मीटर। इन 10 स्टेप्स देयर आर 0.8 into 10 मीटर मींस 8 मीटर। मींस वो 8 मीटर चलता है, यहाँ से चल के यहाँ आया। अब वो 90 डिग्री टर्न करेगा, चाहे नीचे कर लीजिए, आप अपवर्ड कर लीजिए। अपवर्ड टर्न किया आपने तो ये अपवर्ड अगेन 8 मीटर से लेगा। ओके, 0.8 into 10, 80 means 0.8 meters. 80 centimeter equal to 0.8 meter. Again 8 meter and again 8 meter. Then the distance covered by the blind man is 8 plus 8 plus 8 plus 8. Distance is 32. But in question, इसने पूछा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड सो द डिस्प्लेसमेंट इज AE. This is 8 and this is 8. This is a right angle triangle. So this is the hypotenuse of this right angle triangle. And the value of this is 8 under root 2. Everybody know by the Pythagoras theorem you can find that this CE is 8 under root 2 and this AC is also 8 under root 2. So total displacement is AE 8 under root 2 plus 8 under root 2, that is 16 multiplied with under root 2 meters. Okay dear students, you have to solve all these questions in your notebook. Thank you.